What is contraction of demand? Sejal? The price decreases and demand increases. Another Price in, okay. Can anybody describe it more elaborately? ये एकदम छोटा तुम लोग बात कर रहे हो मतलब now you have to have more you have to have at least 5-6 sentences to talk about this. Abhijit, can I ask you this? Yes, sir. Bolo. Tell me about it precisely. Sir, expansion की contraction. Tell me both together. What 5 to 6 sentences you can tell me about it? When the demand of the commodity increases, the price of the commodity decreases because people will buy its substitute or something. Very And good. when the price of the commodity decreases, the demand for it get increased. Okay, fine. Well, what I wanted you all to understand now by this age group of yours, we should understand that this is nothing but the diagram of law of demand. Okay, when we talk about law of demand, this is what we say. Okay, we increase the demand, we decrease the demand is another concept. When we say expansion and contraction, it is only related to the price. When we say increase and decrease, it is only related to other factors than the price. Right? So this is what is the thing about. Anybody else would like to add up something here? Anybody would like to add up something here? So other thing remain constant that time. Other factors. Like what? Factors remain constant, such as income, price of substitute good, etc. Determinants of demand. Yes, basically they are determinants of demand. So this diagram everybody knows. किसी को नहीं आता ये diagram? Okay. Now who can explain me looking at the diagram with the points? Okay. Let's take up with something. Abhishek, तू बता सकता है diagram? Can you describe this diagram? सर वही है नहीं वही नहीं सुनना है मुझे अलग से सुनना है मुझे पूरा सुनना है. How do you describe this diagram? Tell me 4 to 5 sentences with this diagram. Price increase, demand always decrease. No, that is not the way. Something better. See, whenever I'm saying describe the diagram, you should start telling what is there on x-axis, what is there on y-axis. So please answer that question first. Abhishek? On x-axis, quantity of demand, and on y-axis, price of the commodity. Curve is demand curve. No, demand curve nahi करना है. DD curve is the demand curve that will come later. Sorry. Now first you tell me what is the original quantity demanded in this diagram. Unnati, can you answer please? I think he's getting nervous. Sir का आदत नहीं है. बोलो. How do you describe it? No, x and y axis is over. Now tell me what is the original demand, then what happens. The original demand is 0, then and the original price is also 0. No, that is not 0. How can price be 0? कुछ मिलता है क्या मुफ्त में? और जो मुफ्त में मिलता है वो हम लोग बात ही नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स में. See, what I want to tell you is, let me tell you, it's something like the original demand, quantity demanded at OP, the price OP is OM. Okay? And when the price increases to OP1, the quantity demanded contracts to OL. And when the price is OP1, OP2, whatever, I don't know, 2 OP2 ऊपर गया वो. अच्छा, if the price falls to OP1, then the demand expands to ON. Can you see this? Am I describing what is there in this diagram? So this is what is description of diagram. क्या होगा जब तुम modules पढ़ना शुरू करोगे ये सब, तो तुम लोग को diagram बहुत detail में लोग explain करेंगे. And you have to ये छोटा diagrams अभी describe करना start करो, तो बड़े diagrams और easily समझेंगे तुम लोग को. See, this is the reason we batter you with diagrams always. Why I was after your lives, now onwards you will understand more of it. Because ये छोटा डायग्राम है, सिर्फ 4 पॉइंट का है, 4 सेंटेंस बोलना है, 5 का वो एक्स और वाई एक्सिस वाला बोलना है.
बट धीरे धीरे तुम लोग को बहुत सारी चीजें एक साथ बोली जाएगी एक ही डायग्राम में, सो दैट यू हैव टू स्टेयर एट इट एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड. Okay, so that was the aim in making you say it. Okay, Unnati, you describe me this now. Okay, see the schedule and explain me the schedule. The two demand schedules for commodity X. How would you describe this? At least give me 2 sentences about it, if not all. Only about demand or with relation to price? With relation to price also, obviously. When average income of people is 2,000 per month, then if the price of the commodity is 5 rupees, then people with average income of 2,000 per month will buy 10 units of that commodity. And when the price starts falling to 4, 3 and 2, then the quantity demanded starts increasing to 15, 20 and 35 units. And when it falls to the least, that is 1 rupee per unit, then the demand is the highest, that is 60 units for people with 20,000 per income. Also, you could have described both the parts here together. One is showing household income of 20,000 per month. The other is showing you the household income of 25,000 per month. So in that case, when the price for A is 5 rupees, the quantity demanded for 20,000 per month is 10 units, and for 25,000 is 15 units. And this is represented by the point A1. Okay, this is how the whole thing will be described. अभी ये चीज जो दिखाया है पूरा चीज डायग्राम में देखो, समझ में आ रहा है क्या सबको? जैसे मैंने बोला, because I'll catch somebody for explaining me something. You'll have to describe the entire thing at one go. Balpreet, Siddhi, Niket, please come on screen. Sujit, come on screen. Don't close screens, please. Karan, please come on screen. Chalo, now I'll catch hold of somebody. Okay. Balpreet, are you there? Yes, sir. Screen पे आ जाओ अच्छा. Screen पे क्यों नहीं आते यार? So Yeah. Tell me about point D1. What do you see in D1? How do So- you? Yeah. So in the point D1, we can see that the people earning household income of 25,000 are fully described in this D1 thing. So according to this diagram, when the price is rupees 5, so the household and people earning 25,000, they buy 15 units in the price 5, which can be described as A1. Correct. They have shown us A1. Yeah. Good. And when the price decreases to 4 rupees, so they can buy 20 units of that commodity, which we can see in B1. Okay. Fine. So And this when is what exactly is describing the diagram. Okay. Now that is the reason why you were always taught a schedule and you were doing with the diagram. Okay. Why I'm making you say this, I want to understand your basics, your understanding also with it. Okay. चलो और किसी को भी पकड़ते हैं. Let's have Karan. Are you there? Yes, sir. Please come on screen also. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Tell me about point C1 something. So What you can see in C1. the diagram is showing increase in demand. Yeah. So when the household income is 20,000 per month, he can buy at price 4, he can buy 15. Yeah. Whereas when the household income increases to 25,000, he can buy at the same price, he can buy a more quantity at 20 he can buy. So you're clear with this? Anybody who has doubt, किसको नहीं समझा ये क्या बोल रहे हैं हम लोग सब, कोई है क्या ऐसा?
your calibers are high. That's why you must have joined this course. But still, if somebody wants to go slow, I can think and understand about that. Okay, किसी को नहीं समझा क्या ये क्या बोल रहे हैं, डायग्राम क्या चल रहे हैं, please ask. Now here they have explained the diagrams. So when you read this whole, you will understand what they have written up there. They say these new data are plotted as demand curve D1 D1 or D dash D dash, you can call it, along with the original demand curve D1 DD. So let's see with this both together. Didn't realize there were two demand curves. Can you see DD curve and D1 D1 curve? दिख रहा है दोनों curves? Anybody who is not seeing that properly? This is the DD curve. What do you see? And you see D1 D1 curve. Okay, D1 D1 is here, and it goes further to E1 also. Okay, it says here we say that the demand curve X has shifted. It is, in this case, it has shifted to the right. Okay, because it is going up, it is going to the right. If it goes down, we'll say it is shifting towards the left. Okay, जितना नीचे आएगा वो लेफ्ट की तरफ आएगा, जितना ऊपर जाएगा वो राइट की तरफ जा रहा है. The shift from DD to D1 D1 indicates an increase in desire to purchase X at each possible price. For example, the price was 4 per unit. 15 units were demanded. An average household income is 20,000 per month. But when the average household rises to 25,000 per month, then 20 units of X are demanded. So मतलब हम लोग एक ही इंसान की बात कर रहे हैं. पहले वो 20,000 कमा रहा था per month, अभी वो 25,000 कमा रहा है. And 4 rupees पे वो 15 units buy करता था पहले, जब 20,000 उसका income था. अभी वो 4 rupees पे 20 units buy कर पा रहा है, because his income has increased. A rise in income thus shifts the demand curve to the right, whereas fall in income will have an opposite effect of the shifting the demand curve to the left. Okay. So let's go to Marvin. Okay. Yeah. Can you describe me the A part of the diagram? What can you see here? Okay. And compare it with the B part of the diagram also, because it's connected actually. Okay, so in the first diagram, we can see that the demand curve is shifting to the rightward direction. That is Okay. when Then add up here from which curve to which curve it is shifting. that is from DD1 to D to D2. yeah D2, Okay. D2. Yeah. And on the right hand side, what do And you on see? the right hand side, from DD1, it's going inward. That is D2. Okay. So what does the right one indicate you? What is it showing? What is the name of the diagram? See there. So it shows The rightward shift in the demand curve. When does it shift towards the right? it Yeah. shows that when the price falls, the demand rises, Okay. And and in the left side, price when- rise, the demand falls. Right? yeah. What Yes, do you name this concept? What is the conceptual name to it? the leftward shifting of the demand curve. Okay, but still something that you have learned in 12th. What is the shift called as? I mean, shifts of demand divided into two parts. What are they? This is the A part is expansion and the B part is contraction of demand. This is going to be in case when we are talking only from the price factor. Yes. But if you remember your diagrams very well, okay, we are seeing two demand curves. When there are two demand curves, then it is not expansion and contraction. What is it? It is increase in demand and decrease in demand. Yeah. Okay. So if you consider the price factor, then it is expansion and contraction. If you don't consider the price factor, then it is supposed to be expansion and contraction. This is what is written here. So this is what they have they have described here. And further, they are talking movements along the demand curve itself, which is in short the same thing. It says it is important for business decision makers to understand the distinction between a movement of a demand along a demand curve
and a shift of the whole demand curve. A movement along the demand curve indicates changes in quantity demanded because of price changes. Other factors remaining constant. Okay, I'm going to the next paragraph directly. Thus, when an economist speaks of an increase or decrease in demand, he refers to a shift of the whole curve because one or more factors which were assumed to remain constant earlier have changed now. When the economist speaks of change in quantity demanded, he means a movement along the same curve. So that is what is called as expansion or contraction, which has happened due to the fall in price or the rise in price of the commodity. Okay, same thing they have just elaborated here. That's why I'm not reading everything exactly. Everybody has followed this. नहीं समझा क्या कुछ? People, please be frank, please be vocal, don't get scared. There's nothing to feel nervous. Even if I answer nahi karoge, it's okay. You can tell me, sir, I'll take time to think, or I need to understand it more. Okay? Or I would like to read once and then I'll answer. But don't get scared, because even in the classroom, I would have kept you at ease. That is what is my way of teaching. Okay? I don't want to hush around with the course. That's why I'm not really doing that. Okay? Of course, we have got a time limit to do everything, but not at the cost where you don't understand anything. Okay, chalo, we are coming to your favorite concept of elasticity of demand. बहुत जन को बहुत पसंद था ये लास्ट ईयर, क्योंकि उनको पूरा साल पढ़ने के बाद भी ये चैप्टर लास्ट तक नहीं आता था. वो सबका फेवरेट चैप्टर रहा है ये इसी वजह से. ओके, प्रबलप्रीत, ये चैप्टर किया था लास्ट ईयर? यस सर, यस सर. अच्छा लगा था? यस सर. ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसका. And Abhishek, what about you? पढ़ा था ये चैप्टर? Yes, sir. अच्छा लगा था? हाँ. अच्छा, ठीक है. शायद ये करने के बाद और भी अच्छा लगेगा. Okay, we're going to mix match a lot of things now. Okay, and I repeat again, everybody, those who are new, I think we become old to each other. Okay, I've started taking the names on screen here because I want you all also to answer. Only my ex-students should not answer. Ex-students थक गए मुझे आंसर दे दे के. Priyank, are you there? Priyank, are you there? I've not seen him today, I think. Priyank is also not there. तो प्रियांक नहीं है, उसको मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, फोन स्विच ऑफ हुआ रहेगा. फोन स्विच ऑफ आ रहा है. He must be sleeping then it means. बैटरी लो रहता है. नहीं कुछ नहीं, वो एग्जाम उसको मालूम है इको बहुत इजी है उसके लिए. उसको भूल गया कि वो सीए फाउंडेशन का इको कर रहा था. चल ठीक है. सिमरन किधर घूमोगे? स्क्रीन पे आ जाओ. संजीता, वेयर आर यू? व्हाई आर यू नॉट ऑन स्क्रीन टुडे? यशवी किधर गई? आ जा. यशवी, मुझे मालूम है तू अंधेरा क्यों रख रही है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट अंधेरा रख के कर. ओके, एंड निकित भी आ गया. सर स्क्रीन प्रॉपर दिखे ना इसलिए. अच्छा, क्यों तुझे तकलीफ हो रही है उसमें कुछ? मतलब इज इट डार्क फ्रॉम माय एंड? छोटा छोटा दिख रहा है ना इसलिए. अच्छा, ठीक है. बट जितना हो सके स्क्रीन पे तुम लोग भी रहो, बिकॉज मैं इंटरैक्ट ज्यादा करूंगा. आई एम गोइंग टू टीच लेस, बिकॉज व्हाट यू नो आई एम गोइंग टू टीच लेस दैट पार्ट. आई एम गोइंग टू आस्क मोर सो दैट आई नो हाँ ये कॉन्सेप्ट ये लोग को आता है क्लियरली. ओके, चल निकित से बात करते हैं. निकित से बात नहीं किया. हाय निकित, हाउ आर यू? Okay. So Nikit, I like your voice. You know, you're loud and clear always. So तेरा आवाज मुझे बहुत पसंद है. All मराठा आवाज है एकदम तेरा नायक वाला. So tell me about elasticity of demand. Last year you have done this chapter, right? Yes, sir. Okay. So what do you know in elasticity of demand? When do you use this concept? Proper तो याद है सर, बट एक बार रीड करना पड़ेगा. ठीक है. फिर माइक म्यूट कर ले, रीड कर तू आराम से. हम लोग संजीता को पकड़ते हैं. संजीता बहुत कम पकड़ में आई है मेरे अब तक, बट अभी मैं देखो पकड़ता रहूंगा रेगुलरली. दोस्ती हो गई इधर से भी. अरे डरने का नहीं, आता है कि नहीं आता है, जैसे निकित ने बिंदास बोला वैसे बोल सकते हो. ओके, बिकॉज मुझे मालूम है मुझे एंड में कराना पड़ता है, बट इफ यू हेल्प मी आउट एक्सप्लेनिंग टू अदर्स, वेल इट्स गुड इनफ. अच्छा संजीता, व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हाट इज इलास्टिसिटी बेसिकली? Proportionate change in demand. Proportionate change in demand. With regards to what? Proportionate change in price. Correct. Price. So price and demand, they have to change in a proportion.
Okay, so basically elasticity means change. And this change that we are studying, here we are considering all the factors. Okay, we are considering price as a factor and other factors. Until now, we were talking about expansion takes place, contraction takes place. But how much it has taken place, that we have not studied until now. This is what I have told in the class last year when I was taking up this topic. So this chapter explains you how to measure the proportionate change. Okay, so they've given us some examples here. We will read out these following situations. As a result of fall in price of a radio from 500 to 400 rupees, the quantity demanded increases from 100 radios to 150 radios. As a result of change in the price in wheat from 20 to 18 per kilogram, okay, so the quantity demanded has increased from 500 kilograms to 520 kilograms. As a result of fall in price of salt from 9 rupees per kilogram to 7 rupees 50 paise, the quantity demanded increases to 1000 kilograms, increases from 1000 kilograms to 1005 kilograms. What do you notice? You notice that a result of fall in price of radios and quantity demanded of radios increases. Same is the case with wheat and salt. Thus, we can say that the demand for radios, wheat and salt all respond to price changes. Then what is the difference? The difference lies in the degree of response. So when we have to compare how much is this change, when we have to quantify it, then that is where we use a concept of elasticity of demand. Change हुआ, increase हो रहा है, decrease हो रहा है, contract हो रहा है, और expand हो रहा है, वो सब समझ गए हम लोग. मगर कितना हो रहा है, कितना degree of responsiveness हुआ, that is what we get to study here. So elasticity of demand is defined as the responsiveness of quantity demanded of a good to the changes in one of the variables on which the demand depends. More precisely, elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in one of the variables on which the demand depends. Okay, ये definition read करो, understand करो, नहीं समझा है वो लोग पूछ सकते हैं मुझसे. Anybody who didn't follow? Anybody who has not followed? I hope you know what is degree of responsiveness of change and things like that. Also, we have done last year about something called as there are 3 types of elasticities. Economics में हम लोग बहुत सारे elasticities पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. We can study about fashion elasticity. We can study about the advertisement elasticity. We can study about the cross elasticity. Cross elasticity, we will talk about substitute goods elasticity and complementary goods elasticity. So, जितने सारे reasons हैं, जितने सारे factors हैं, जितने सारे determinants हैं, उतना types का elasticity हो सकता है. And we can study all of them. But it should be useful for us, na? So whatever factor is important for you, you will study only those. Generally in economics, we teach and we study only 3 types of elasticity. One is price elasticity. One is, that is income elasticity. And third we study is cross elasticity. But the last year, very clearly, we were given only with one factor to discuss with, and that was price. Because price is the main core of the whole subject, and that's why the price is taken as a factor. Okay. Next, when we come talking about this further, when we come about these factors further, we understand that price elasticity is the most important factor. And so we always start studying first with the price elasticity. Here we are trying to understand how much is the elasticity. Elasticity means the change. How much is the change when the price as a factor is changed to some extent. So that's why we have to see the proportionate change. We are measuring the proportionate change of that. Definition says price elasticity of demand expresses the response of quantity demanded of a good to the change in its price. Okay.
given the other factors remaining the same. We are just talking price changing. So it is measured as percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. Okay, ये हमने methods of elasticity में बाद में किया था. तो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में लास्ट ईयर 12th में भी किया है. हमने ये फॉर्मूला यूज किया था and this was called as percentage method. What had we done in that? We had taken the quantity demanded in the percentage form and divided with percentage change in price. So demand divided by price, but percentage change. So how do we find the percentage change in quantity demanded and price? Okay, quantity demanded का change कैसे ढूंढेंगे हम लोग? हम लोग quantity change, that is delta Q upon quantity, original quantity, that is OQ. That is how we are taken. Okay, it is you can have delta Q upon OQ into 100, the whole upon it is delta P upon original P OP into 100. into 100 हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं. सॉरी, हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. We need the percentage change. This is further going to give you as, now when you find change in quantity upon original quantity same रखा है इधर. Okay, ये इसका next step है. इसका next step ये आ रहा है. तो if you see 100 into 100 into 100 जो है वो दोनों कट हो गया. अभी क्या बच गया? Change in quantity upon original quantity which is here and division है. Division है तो फिर हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है. You all remember that. And this becomes original price into change in price. Have you followed until here, or anybody needs explanation again? इसको नहीं समझा है लास्ट ईयर भी तो प्लीज अब भी आज पूछ लो. तुम लोग को चांस मिल रहा है वापस पूछने का. If not understood, please ask. Okay, so going further with, how do you find change in quantity upon original quantity? This is how you find. Delta refers to a triangle. So delta Q upon Q into P upon delta P. Okay, so if we go to put these numbers here, then you know how to find the answers. Suppose delta Q upon Q हमने cancel किया and we get 4 this side and we get on this side P upon delta P, we will get it as 2. Now 4 is greater than 2, you know that. So elasticity of demand is greater than 1. If we get this ratio, which is both is 1, सब कट हो गया और 1 मिला, तो elasticity of price is equal to 1. Okay, and finally if we get after cancellation, the left hand side is 0.75 and this side we get the ratio as 1 or 5 or 3. Then 0.75 is less than on the other end. So it is less than 1. That shows what? It shows that this is how we can find out price elasticity with this method. Anybody who has not followed, please answer. Okay. Now nobody is going to ask you formulas. Of course, formula has to be remembered by you. Might be they ask you the formula also, but generally they don't ask you the formula. Now you are in a different trap. A lot of sums will be given on this basis. Your half the paper will have numeric system. Okay, and you will have to quickly calculate your answers. So when you calculate your answers, obviously you have to be very quick. You will have to have a rough sheet with you, and that is where you will be solving your answers with it. Okay. किसी को डाउट है? अभी भी पूछ सकते हैं. Take up the first illustration here. The price of the commodity decreases from 6 to 4 and quantity demanded of the good increases from 10 to 15. Find the coefficient of the price elasticity. Okay, so what is the solution given here? Minus दिखाया इधर. Minus क्यों दिखाया है? क्योंकि price कम हो गया. Okay, इसके लिए minus दिखाया है. बाकी पूरा हमने वैसे ही solve किया है. और हमको आंसर मिला -1.5. Minus is negligible in the answer here. We are going to check as how much is the coefficient. This -1.5. Of course, the answer is that way.
but because price has decreased, that's why the minus is shown. Okay. A 5% fall in price of value of goods, sorry, price of good leads to 15% rise in its demand. Determine the elasticity. Comment on its value. Okay. So the answer you get after doing the whole process is 3. 15% upon 5%, that is 3. So the comment, the good in question has elastic demand. You understand the answer? It means that good that we are talking about, it has elastic demand. Because the answer kitna aaya? 3. It is greater than 1. So the elasticity is greater. Next answer when you see, well, the price of the good decreases from 100 to 60 rupees. So the price elasticity for demand for it is 1.5 and the original quantity demanded is 30 units. Calculate the new quantity demanded. यहाँ पे quantity demanded ढूंढना है, delta Q ढूंढना है हमको. So they have solved the sum for you. You can see such examples here. Okay. As you saw, they have asked for comments. Now they may, obviously you will not be getting numerics to solve that time and find the answer. You will be given 4 options. Your answer will be to one of the answers given here. Now, when they say comment, even comment they will add up. So you have to select the best comment out of it. Okay, that is what you have to be alert with. Okay, ये थोड़े sums वगैरह जो है आज go through करोगे सब लोग और जैसे मैंने बोला है मैं worksheet भेज रहा हूँ. Okay, okay, you all can suggest me. You would like to start with demand first, or you would like to do with the first chapter first? I can. So demand. Demand. Everyone. First chapter. Okay, first chapter और भी है क्या बोलने के लिए? More somebody chatted. And people, please be vocal. इधर की दुश्मनी नहीं हो जाएगी अगर तुम बोलोगे तो भी. So if you think that demand, Sanjita also says demand. Okay. Sanjita, mic चालू है ना? Demand. Okay, demand. So everybody is demanding for demand. Okay, then I should go with demand today. And after 2 days, anyways, I'm going to post the next one. So because this is fresh, even I would suggest demand today. So today I'll send for demand, and then you start calculating. Might be a lot of things are not yet completed, so you may not be able to solve there. So that you can keep it pending until we solve it. Okay. And answers, how to send and everything, I will inform you. So you all just get ready with the answers in the answer sheets. Okay. Write down somewhere your answers in. Or I can. Even in economics, you can use calculators. Yes, you can use calculators. Because now you are the FI BCom levels. When you enter FI BComs, they allow you the calculators. I think until last year they were allowed anyways. Now that the thing is awaited for, let's see if there is a change in the system. I don't think there is a change because maths you are allowed, accounts you are allowed. So economics the step mother treatment nahi karenge wo log. They will allow you for that also. So don't worry. I think it will be allowed. Don't worry about that. Okay. चलो नेक्स्ट वाला आ रहा है तुम लोग का फेवरेट डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट. एक्चुअली बहुत जन डायग्राम्स मिस कर रहे थे. उन्नति वाज मिसिंग. डायग्राम्स नहीं आ रहे हैं. बहुत साल हो गए डायग्राम्स नहीं किए हैं. सो आई रिमेंबर द सेकंड हाफ ऑफ दे सेड सर अभी बोर होता है हम लोग को, अभी डायग्राम्स नहीं है. ओके अश्विनी, हाय, आई डिडंट सी यू फर्स्ट, सो नाउ यू आर गोइंग टू बी कॉट. सो लेट्स कैच होल्ड ऑफ यू अश्विनी. And my oldies, please don't feel bad because ये नए वालों के साथ भी मुझे उतनी दोस्ती करनी है जितनी तुम्हारे साथ है मेरी. और तुम लोग तो मुझे झेल ही रहे 3 साल से. Your batch स्पेशली 9, 10, 11th, 12 4 साल हो गए. अभी 5वां साल है. 10th में नहीं था तुम लोग के साथ. Right now, Unnati, I was not there with you. फिर भी सर थोड़ा टाइम तो देना. थोड़ा तो झेला था ऐसा बोल रही है. स्मार्ट है. रुमाल में लपेट के लगा रही है. वेरी गुड. We are starting with point elasticity, the next method. Okay. Point elasticity method. Now here what you see is little different. Since we have to calculate points, so I'll show you first what you knew and what you did also. Okay. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं. Okay. चलो अच्छा तुम लोग को पूछते हैं, Ashwini, you remember how to calculate with point elasticity?
You remember something of last year? सर वो लोअर सेगमेंट माइनस डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऐसा कुछ था. हाँ, बट डायग्राम कैसे क्या बनाते थे तुम? कैसे करते हो? कुछ स्टेप्स बताया होगा ना, ऐसे ही इतना ही बताया था लोअर अपॉन अपर करने का. Now, where will you get lower segment and upper segment from when you will draw this? So how do you draw this? When do you draw this? When is this method useful for you? Achha, I will not disturb you more. Think over this. We will ask one of the ex-students because I want to see whether they remember it or not. Siddhi Kamble, जरा Yes. स्क्रीन पर आइए. Yes, sir. जल्दी आ. उधर ना. Yes. चल बता अभी आंसर. कैसे बताया था मैंने? क्या एक्सप्लेन किया था इसमें? याद है कुछ? नाही. दोन काना खाली वाजवेल तुझं मी आता. काय एवढे पण तुझं लक्षात पण नाही. सिर्फ मतलब ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया था, वाई एक्सिस एंड देन ऐसे कुछ सेगमेंट ड्रॉ किया था कि नहीं वो याद नहीं, एंड देन एक कर्व ड्रॉ किया था उस पे. कर्व ड्रॉ किया तो सेगमेंट नहीं होगा. अच्छा ठीक है, चल बाद में वो बात करते हैं. ये था. हाँ. और फिर कर्व ड्रॉ किया था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लाइक जो भी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. वेरी गुड. यशवी, क्या याद है बच्चे? मैंने तो नहीं पढ़ाया था तुम लोगों को, बट लेट मी ट्राई विथ यू. सर ये पार्ट ही स्किप कर दिया था, ये पढ़ा ही नहीं था मैंने. तो मामू तेरी वाट लगती. आई कैन जस्ट से दैट नाउ. क्या तो उन्नति यो लास्ट हो, नहीं तो ओम जादव को पकड़ूंगा. जल्दी बोल. याद है तुझे कुछ? उन्नति नहीं सर, मेरे को ये पार्ट नहीं पसंद है. अभी झक मार के पढ़ना पड़ेगा. यही चीज मैं तुम लोगों को बोल रहा था, ये चैप्टर्स मत छोड़ो. तो तुम लोग ने छोड़ा और तुम्हारी बाट लगेगी अभी. ओम कुछ याद है क्या? मेरा मॉर्निंग बैच सर नहीं पढ़ा था सर. माय फर्स्ट लव बैच इट वाज अर्ली मॉर्निंग. आई यूज्ड टू मीट सच ब्राइट वंस ऑफ माइन. मेरे बॉयज भी स्ट्रांग थे इसमें बहुत सारे. आज प्रियंक मिसिंग है, नहीं तो इवनिंग बैच की लाज रख लेता वो. सर आज हाँ बोल बोल बोलो. अच्छा ठीक है. क्या शांत. क्या मीन्स शांत हो गए तुम लोग? क्या बोल सकते हैं? आंसर कुछ याद नहीं तुम लोग को. वेरी बैड. अच्छा चलो, लेट मी टेल यू व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस एंड व्हाट आई वांटेड सर टू. प्रियांक को पूछो ना. अरे प्रियांक वो है आया ही तो. नहीं. मगर किधर प्रियांक? आया, प्रियांक है आया. तू? किधर था रे? सो रहा था क्या? सो रहा था तू? पहले स्क्रीन पे पता नहीं था. स्क्रीन पे आतुषान है. देखने दे. तू प्रियांक की एक और भी बात करो उससे. ये याद है क्या मेथड? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेस फ्रॉम यू, गेज फ्रॉम यू रादर. वी आर डूइंग विद पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड. कैसे किया था हमने? कुछ याद है? Priyank, unmute yourself just in case you are speaking. I can't hear you. Unmute कर दो. एक मैथ में टेंजेंट लीनियर नॉन लीनियर कवर रहता है तो टेंजेंट बनाते हैं. और लीनियर पे लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट. ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया था मैंने. ओके, मैंने तुम लोग को वो स्ट्रेट वाला कर्व तो सिखाया ही नहीं कभी भी. ओके, लीनियर नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू व्हाट इट इज. Anyways, now we'll go to how to explain this, what we do in this. Okay, this method will begin only when you have a demand curve ready with you. Only when you make a demand curve, after that you can measure with this method. Are you understanding? This is the first statement you should remember of mine. Okay, suppose I am giving you this. अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ. I will explain you on a whiteboard. मुझे ज़्यादा नहीं आता यूज़ करना ही है क्योंकि आई ट्राइड इनफ. जब वो नहीं हुआ तभी मुझे यूट्यूब चैनल चालू करना पड़ा अपना. ओके, तो प्रियंक यू आर लेट. मेरा यूट्यूब चैनल भी अभी मेरे नाम का, तो यू ऑल कैन सब्सक्राइब इट एंड देन यू कैन सिट एंड वॉच लॉट ऑफ डायग्राम्स इन दैट. ओके, 12th स्टैंडर्ड का वही सब चैप्टर्स चालू है, बट फॉर देम आई हैड टू स्टार्ट विद दैट देन. ओके, नाउ दिस इज द ग्राफ दैट आई एम ड्राइंग फॉर यू.
Yeah, how do you draw that horizontal? Second, straight line, straight बनाया. Just 1 second, everyone. I'm fine with the cross होना चाहिए. ऐसा. Now I'll show you how we go about this method. Okay. अभी इसमें मैं सिर्फ curve draw कर रहा हूँ by the way. Suppose I've drawn a curve. तो ये कर्व हमको मिल जाएगा ना, उसके बाद ही ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. आई मीन उसके बाद ही पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज किया जा सकता है. फर्स्ट आई नीड दिस. नाउ व्हाट आई नीड टू ड्रॉ हियर इज आई विल हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट. ओके, सो हाउ वी ड्रॉ अ टेंजेंट, वी विल मेक something which is joining from the x-axis to the y-axis, so that it sharply touches here. Okay, and we will make a tangent here. Okay, when we make the tangent here, so suppose it was not here and the graph was having something like this. So again, when we make a tangent here, so how to measure, that is what I am trying to talk about. पहले हम लोग को डिमांड कर्व मिलना चाहिए. डिमांड कर्व होगा उसके बाद ही हम लोग के मेथड को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. When we go on making this, so we will divide it into two parts, and wherever the tangent is sharpest point, we will put a point P here, P or E, whatever you call it as. Okay, जिधर भी sharp touch करेगा. And wherever it touches sharp, suppose here or it is here, either ways. After that, we will start with. After that, we will start measuring the lower segment and upper segment concept. Okay, फिर scale से measure करने का. So we will see the distance from the lower segment upon the distance with the upper segment. Suppose this is R and T. R and T is upwards and R and small t is downwards. So suppose R2 big T is 6 units and R2 small t is 4 units. So हमारा ratio होगा 6/4. If it is 6/4, the answer will be more than 1. Are you understanding this? Anybody not following this? Ashwini, can I ask from you? Are you following what I'm saying? Understood. Okay. So I repeat, this is 6 units. Sir, can you explain again? What do you want exactly? Tell me that now. Again means what do you want? वैष्णवी बोल रही है, तुम लोग आधी आधी बातें नहीं करो, मुझे पूरा बात करो. बोलो सर मुझे ये पार्ट नहीं समझा या ये चीज नहीं समझी. अभी कर्व बोल के छोड़ दिया. कौन सा कर्व बोल रहे हो? जो डायग्राम में कर रहा था वो वाला? सर डिमांड कर्व के बाद नहीं समझा, सेगमेंट ड्रॉ किया ना वो. हाँ ये अच्छा, देखो डिमांड शेड्यूल दिया होता है, ये पता है पहली बार वैश्वी? बराबर. ओके, थोड़ा जोर से बोल, नहीं सुनाई दे रहा नहीं तो. अच्छा, सेकंड पॉइंट है, जब डिमांड शेड्यूल दिया है तो हम डिमांड कर्व बनाते हैं. बराबर बराबर. डिमांड कर्व बनाने के बाद हम डिमांड कर्व जो बनाते हैं वो कर्व को हम लोग को टैंजेंट बनाना है. तो मैंने जो ड्रॉ किया वो डिमांड कर्व था. डिमांड कर्व के बाद मैं ये टैंजेंट बना रहा था. उसको टैंजेंट बनाने के बाद हम लोग उसका जो टैंजेंट पॉइंट है उसको मार्क करते हैं. जो शार्पेस्ट एज होता है उसको मार्क करते हैं. अभी मैं बोल रहा हूँ आर से लेके टी तक ये लोअर सेगमेंट है एंड आर से लेके स्मॉल टी तक अपर सेगमेंट है. ये दिख रहा है यशवी? यस और नो? ओके. नाउ इफ यू टेक फ्रॉम आर टी, ओके, इफ दिस इज 6 यूनिट्स, स्केल रख के मेजर करिए, 6 आएगा और ये अगर 4 आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर,
ओके ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि यही है। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 6/4 इट विल बी ग्रेटर देन 1। हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी राउंड अबाउट से व्हाट 4 1s and 4 5s करीबन होएगा। Okay, so you will be getting 1.5 which is greater than 1. So then that will show that elasticity is greater. So that's a greater elasticity. अगर हमारा lower segment is 4 and upper is 6, so 4/6 होएगा which is 0 point something it will be. Okay, so then the answer will become what? It is less than 1. So it is less elastic. And if we have Rn big T as 5 and Rn small t as 5, so they are equal. So ratio is equal to 1. So the answer is equal to 1. Okay, anybody who didn't follow? Karan, Prabalpreet, Tejal, anybody who has not followed, please tell me. Siddhi, did you follow now? Yes, sir. So even I meant something like that only. ऐसे नहीं, but see, your starting line should have been कि demand curve बनाना पड़ेगा. Demand curve बनने के बाद ही ये तुम लोग method use कर सकते हो. This are the 2 sentences I always use in the classroom, and I emphatically stress upon this. Priyank, have you followed this now? Yes, sir. Good. So everybody has to remember these methods were very easy. उन्नति, क्या बोलती है अभी? Yes, sir. पूरा समझा? Yes, sir. जितना डर है आज खत्म करो. ये डर के साथ जियो मत. नहीं डर सर, के डर आगे नहीं। जीत है. ओके, और दूसरा एज पे डर के आगे कुआं है. तो एक जगह तो कूदना पड़ेगा, या जीत में या तो हार में कूदना पड़ेगा तुमको. So you have to decide that, please. Okay, don't get scared about these methods. They were very easy. And frankly speaking, I have tried to go in such a way where I make you understand like a common man this thing. Okay, I'm sure if you sit and see other online videos of these people, you know, even we have done researches earlier. तो मैं ये देखता था कि किसी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है क्या, मैं कोई वीडियो के बारे में सजेस्ट करूं क्या क्लासरूम में. बट ऑफ कोर्स आई am speaking right now in Hindi quite a lot, but there have been a lot of professors, या तो पूरा हिंदी में या तो पूरा इंग्लिश में है, बट इतना कॉमन मैन लैंग्वेज में तुम लोग को नहीं समझेगा ये चीज़ की तरह. तो जो है वो अभी पूछ लो, that will be good enough for you guys. Okay, now here again they have written the same formula if you see. Okay, it is dq upon dp into p upon q. Okay, where they have written about the distance of q upon distance of p into p upon q, the original price and quantity. Okay, dq is the derivative of quantity. That is what is the distance. That's what is derived with respect to its price at a point on the demand curve, and pq are the price and quantity at that point. Point elasticity is therefore the product of price quantity ratio. Okay, price and quantity ratio है ये Q है, ये P है, इसका एक रेशियो, और ये ओरिजिनल प्राइस और ये ओरिजिनल क्वांटिटी उसका रेशियो. Okay, it is to be noted that elasticity is different at different points on the same demand curve. Given a straight line, the demand curve PT, point elasticity at any point say R can be found by using this formula. Okay, so you can use for point elasticity this formula also. Okay, of course they must have described something down. More illustrations coming up. Sir, हाँ जी बोलो. वैश्विक बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा. माइक अनम्यूट कर, वो भूल गई तो. माइक अनम्यूट कर तेरा. हाँ अभी बोल. sorry sir. बोलो बोलो. सर माइनस dq क्यों दिया है? माइनस dq क्यों दिया है, कोई बता सकता है? फॉर्मूला में. हाँ, माइनस dq क्यों दिया है, बता सकता है कोई? Anybody? वो डिक्रीज हो रहा है उसके लिए. That is the answer. Okay, but we'll be neglecting that because it is a price factor coming in there. जो डिक्रीज होता है वो डी, वो हमेशा माइनस में दिखाते हैं, whether the price or the demand. तो इसके लिए माइनस डी क्यू दिया है. Okay, that is how they have shown. Very good, Daksha. Good. Okay, so they're giving some concepts here. They're coming
Using the formula, we can get elasticity at different points. So that you can see here on this line also. तुम्हारा tangent line किधर है, tangent point किधर है, उसके ऊपर तुम्हारा different elasticities का answer इसमें है. This diagram was there in the textbook if you remember. Okay. And now we are going to the third method is arc elasticity method. Okay. अभी arc क्या होता है? हम लोग जो ये AB point बना रहे हैं और हमारा जो DD curve है उसके बीच का space को arc बोलते हैं. Okay. तो arc कितना wide हो रहा है और arc कितना small, arc कितना wide हो रहा है और कितना small हो रहा है उसके ऊपर भी different answers मिलेंगे हमको. So arc elasticity is another method where we can find this. Okay. What is the method for that? Very easy again. Basically all this is based on formulas. So तुम लोग को formulas लिख के रट्टे मारने पड़ेंगे and they are very simple ones because you are math students. Half the time I think elasticity is in maths also for you all, right? Am I right in saying that? You do something related to arc elasticity in maths also, right? I don't know, I'm not sure, but I remember somebody saying 11th की portion में था तुम लोग को शायद. You do some elasticity concept with maths also. So I इलास्टिसिटी होता है लेकिन आर्क इलास्टिसिटी नहीं होता है. अच्छा नहीं मैं मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने ये methods might be formula based ही किए होंगे वहाँ पे भी. So this formula may be a little familiar to you also. Okay. So here again we are taking quantity divided by price. Okay, that's what in short we are taking. But here we take it as Q1 minus Q2. Okay, Q1 is original quantity minus Q2 is new quantity upon Q1 plus Q2 into P1 plus P2 upon P1 minus P2. अभी देखोगे इधर पहले माइनस है फिर प्लस है और इधर पहले प्लस है फिर माइनस है. क्यों होता है? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं. तो डिवीजन की जब भी इक्वल टू डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप लिखते हो उसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये रेसिप्रोकेट होता है. So that's why plus comes here first and minus comes here later. छोटा छोटा पॉइंट्स याद रखो and then you'll be able to do the sums very easy. Okay. Another warning to you. अगर तुमने wrong formula wrong method में use किया, they are telling you coefficient find करने को, but you are doing the arc elasticity method. तो डेसिमल का आंसर्स की वजह से आंसर्स का जो ऑप्शंस होता है ना तुमको आंसर मिलेगा उसमें से 4 ऑप्शन में से एक होगा बट स्लाइड डेसिमल डिफरेंसेस इतने होते हैं जिसकी वजह से आंसर बदल जाएगा तुम्हारा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द आंसर इज 3.5. ओके बट यू आर गेटिंग 3.25 व्हिच इज आल्सो एन ऑप्शन. बट तुमने क्या आर्क इलास्टिसिटी यूज किया एंड दे वर आस्किंग फॉर पॉइंट इलास्टिसिटी. तो अगर तुमने फॉर्मूला रॉन्ग यूज किया ना तो तुम्हारा आंसर डेसिमल्स में चेंज होगा एंड यू थिंक कॉन्फिडेंटली इट्स राइट बट बिकॉज ऑफ डेसिमल्स आल्सो यू विल बी रॉन्ग. So be careful while using these formulas. तो अब लग रहा है ना थोड़ा सीए का पढ़ाई हो रहा है ये नया नया चीज डिमांड में करके. अच्छा किसी को डाउट है क्या तीनों मेथड्स में अभी तक जो हमने किया? Priyank, you want to say something? No. मुझे लगा माइक ऑन है. You want to ask? I thought. किसी को भी पूछना है? दक्षा कुछ पूछना है क्या बच्चा? No, sir. Anybody else? Anything else you want to ask? Urvi, any doubt? Om, Abhishek, कुछ पूछना है अभी? No, sir. Ashwini, have you followed all 3 methods? Okay, ये तीनों मेथड में फॉर्मूला पे ही कॉन्सेंट्रेट करो. सम्स का नंबर्स चेंज होगा तो तुम्हारा आंसर चेंज होएगा उसमें बस. पर तुमको याद रखना है. सो मेक वन स्मॉल बुक where you can write your formulas of this chapter and start working on those illustrations for yourself first, and after illustrations when the numericals are given, more sums are done by you, so that time you can start doing it. Simran, any problem there? No, sir, it's clear. I think you've still done it in your FI level. Yes, you sir. are aware of this. करिश्मा कोई डाउट है क्या बच्चा? करिश्मा कुठे गेली तू? हाँ सर. क्या थक गई पढ़ाई करके? इतना लो आवाज सुबह सुबह.
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अरे इतना दुखी आवाज का है तेरा, क्या हो गया? कुछ नहीं। थकावट हो गया लगता है सीए का पढ़ाई का शुरुआत में ही। चलो लेट्स प्रोसीड। द सेम मेथड दे गिवन एन एग्जांपल P1 P2 दिया है, 500 दिया है, 400 दिया है, which means is the old price, this is the new price. Okay, Q1 is originally 100 and because the price is reduced, you can see it is Q2 is 150, the demand has increased. इसमें लॉजिक भी याद रखना है तुमको। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी आर टॉकिंग इंफीरियर गुड्स, दोनों रिवर्स एक्शंस हैं, आई मीन वन इज डिक्रीजिंग वन इज इंक्रीजिंग, देन वी आर टॉकिंग सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स। छोटा छोटा पॉइंट है, चीजें ध्यान रखो। ओके, आई एम गिविंग यू अ मिनट। I want you all to read out about interpretation of numerical values of elasticity of demand. Okay, नीचे 3 डायग्राम भी दिया है, देख लो। 5 डायग्राम है, सॉरी, अपने फेवरेट डायग्राम्स, so you know what it is. Just go through that please. Any doubt you can ask. Please read that interpretation of numerical values. Any doubts? Now, whatever you come across there. ये तो वैसा अब लिखा है जो क्या 12th वैसा? स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बस भाषा अलग है। तेरी भी भाषा अच्छी लगी मुझे जब तूने बोला। सीरियसली आई एम मिसिंग यू ऑल। इस साल एक तो हालत ऐसा हो गया है कि हम डिजिटल हो गया हर एक चीज। We miss you too, sir. I wish we could have been in the classroom and been, even though there is a small batch and we all could have been together. This batch, of course, seems to be nice and concentrating on studies. Okay, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। Okay, if you remember all your 5 diagrams, that's what they have mentioned about. So when you work on numericals, you see one of your answer is something, your elasticity of your price elasticity is equal to 0, equal to 1, it is infinity, it is greater than 1, it is less than 1. Those 5 statements written. किसी को last year नहीं समझा था ये कुछ, please पूछ लो. The new ones especially, because old ones I've got them and got this work done. Of course, if you still have doubts, ask. Okay, Daksha, doubt है क्या इसमें? नहीं सर। सर ये तो वही है ना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली Yes, इनइलास्टिक। yes, same thing it is. ओके Okay, and again here ये डायग्राम्स कोई पूछने नहीं वाला है तुम लोग को, बट वो लोग तुमको न्यूमेरिकल्स पे तंग करेंगे और न्यूमेरिकल्स का वैल्यू मिलने के बाद बोलेंगे फाइंड आउट व्हिच काइंड ऑफ केस इट इज. So then you have to say it is relatively elastic or relatively inelastic, or might be it is at the most unitarily elastic. In practical life, in practical sense, only the last 2 diagrams are sensible. Theoretically, we have to start somewhere and we have to end somewhere. So that is why one starting point and one ending point we have got, which is both impossible issues. So question will be in MCQ type or in theory? MCQ, only MCQs. सर तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर MCQ में? तो सपोज तुम लोग ने न्यूमेरिकल कुछ आंसर ढूंढा, ओके,
तो तुम्हारा न्यूमेरिकल आंसर ढूंढने के बाद समथिंग लाइक दैट व्हाट आई एम टॉकिंग। ओके, अभी ये लोग ने कैलकुलेशन किया है इलास्टिसिटी का, तो वो लोग का आंसर मिला 1.8 विच इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो तुमको ये 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो तुमको फाइंड आउट करना है ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है कि लेस इलास्टिक है। दे विल आस्क यू विद ऑल कंफ्यूजिंग वर्ड्स, दैट्स ऑल, बट बेसिकली दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड अंटिल नाउ। और जो तुमने किया है वही चीज को न्यूमेरिकली पूछेंगे तुमको, बस उतना ही चेंज होएगा। दैट इज वेयर आई ऑलवेज टेल यू ऑल इन द क्लासरूम्स, our SSC board is very bad at this. They should make you do, you know, some numericals there at the school and college levels also. All ICSE and CBSE boards are doing this. And IGCSE, so Babre, 9th standard I have seen these topics with them, and with numericals they are doing that. 9th standard, can you believe? In 9th and 10th, I had last year somebody who had inquired, and somebody very known to you guys indirectly. Okay, अपनी जुई मैम है ना, उनकी एक रिलेटिव को उन्होंने भेजा था मेरे पास, एंड शी वाज अ गर्ल फ्रॉम ICSE बोर्ड, IGCSE बोर्ड, सॉरी, एंड शी हैड कम टू मी विद अ 9-10 textbook, and they were learning demand, supply and everything. And everything that you are doing now at this stage, they have done it in 9th and 10th with them. So that is where I feel it is, मैं थोड़ा इसके लिए तुम लोग को तभी तंग करने का करता हूँ कि अगर मुझे हो जाए तो अच्छा रहेगा। करिश्मा इज आस्क्ड सर आर्क इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करो ना। ओके करिश्मा, किधर गई तू? करिश्मा, आर यू हियरिंग मी? यस सर। हाँ, आर्क इलास्टिसिटी नहीं समझा तुझे? नहीं समझा। ओके, बट देन यू शुड हैव आस्क्ड मी ना। टाइप करते हो ना क्या, इधर थोड़ा लेट पॉपअप होता है मेरे पास, तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है व्हेन यू आस्क्ड। Let's see with arc elasticity again once more. Okay, now very first thing is arc elasticity. I told you, you have to just remember this formula. Okay, so if you work on this formula, you can calculate arc elasticity. Arc हम जो बनाते हैं, so on that basis they have made this equation for you. Okay, original price क्या था, नया price क्या है, original quantity क्या था, नया price quantity क्या है, and then if you work on this formula, you will numerically get an answer. अभी जैसे वो लोग ने नीचे example दिया, so I'll take up this example now. How to calculate arc elasticity? They have said P1, P2 is given, Q1, Q2 is given. You will have to learn this formula of arc elasticity. Okay? Q1 minus Q2 करना है, so you will take Q1 is 100 minus Q2 is 150. So difference is how much? 50. Okay? And Q1 plus Q2 when you do, it is 100 plus 150 is 250 into P1 plus P2. 500 plus 400 is 900, and 400 minus 500 is 100. Okay, so when you actually go to solve this, you have got the answer as 1.8. Now 1.8 is greater than 1. Okay, if it is greater than 1, then it is relatively elastic. तो इसे हमको आंसर मालूम पड़ेगा, हमको न्यूमेरिकल्स पे वर्क करना पड़ेगा और आंसर बताना पड़ेगा इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 1. दे कैन गिव यू द 4 ऑप्शंस. ओके, बाकी मेथड तुम लोग ये भी है कि थोड़ा रीडिंग करो. इफ यू हैव नॉट फॉलोड एनीथिंग, अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन रिक्वेस्ट मी फॉर डिस्कसिंग दैट, एंड वी कैन स्टार्ट विद द डाउट्स ओनली फर्स्ट. करिश्मा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ दिमाग में? करिश्मा बहुत स्लो है तो आंसर देने में. यस और नो? नहीं सुनाई दे रहा मुझे कुछ. अच्छा, बेसिकली वो फॉर्मूला बेस्ड है. ओके, आर्क क्या होता है वो डायग्राम के लिए दिखाया मैंने. जब भी हम लोग डायग्राम में जब ये डिमांड कर्व बनाते हैं, ओके, तो डिमांड दिस वंस कैन दिस ब्रांच का. हेलो actually on हो गया या.
इंग्लिश का फर्स्ट हो गया, आज सेकंड करा नहीं, सेकंड स्टार्ट किया मैंने कल उनके साथ, आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, so that's the order you wanted to do. ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस ऑफ, ये बोल रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहे हो ना आप। एजुकेशन का फोर्थ फेज में खुलेगा, इट विल स्टार्ट इन अगस्त, अपना अगस्त या सितंबर में जाएगा ये चीज, तो अपना यूनिट टेस्ट नहीं होने वाला है ज़्यादा कर। हाँ, फर्स्ट टर्म का होगा, फर्स्ट टर्म होगा एग्जाम, तो हम लोग को सेमेस्टर तक हो सकता है, तो क्या होगा क्योंकि लर्निंग तो कर ही रहे हो ना बच्चे, अभी सबको मालूम है ऑनलाइन जूम कर रहे हैं, स्कूल्स भी तो कर रहे हैं ना जूम का भी, तो बहुत सारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी, कुछ स्कूल्स हैं जो करना बाकी है, वो लोग का गवर्नमेंट अलग सिस्टम बना रही है, उनका कुछ नया ऐप बना रहे हैं, जो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स है ना उनका ऐप बन रहा है, उनका ऐप में वो डिसाइड होएगा कि वो लोग कैसे करेंगे, और स्कूल्स को मतलब ज़्यादा टाइम, हाँ करेंगे तो जरूर, मगर कितना वो सीबीएसई का है अभी तक, हाँ अपना एसएससी के लिए कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ ऐसा कुछ। मुझे लगता है तो होएगा, नहीं नहीं टेंशन क्या है इसमें, टेंशन हम लोग को हो गया, हमारा हमारा काम इधर खत्म हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो सोच रहे हैं। नहीं नहीं ऑब्वियसली वो तो कराना पड़ेंगे, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ना, तो हम खुशी खुशी कराएंगे बाद में भी, मेन तो उनका टाइम यूज हो रहा है और हमारा भी टाइम यूज हो रहा है, देखा जाए तो नहीं तो वो लोग वेस्ट कर रहे हैं टाइम। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो होमवर्क के पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं, इंतजाम खाता रहता हूँ। अच्छा मुझे अभी प्रियंका ने जो डाला है, आप लोग भी वैसे ही करो होमवर्क। हाँ करेक्ट, तो आप भी गूगल ड्राइव का करो, हाँ तो वो उनको पूछ लो कि हम लोग 10th के लिए भी यूज़ करें तो सिस्टम, मुझे नहीं लगता नहीं बोलेगी, क्योंकि वो सर के साथ ही डिस्कस करने वाली। हाँ इसके लिए चलेगा, नहीं नहीं इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, मैं एक्चुअली अभी 12th का लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा आपके बारे में, हाँ थोड़ा ठीक है ठीक, चलेगा ओके, और आज सेकंड पोएम हो जाएगी और मैं फर्स्ट यूनिट ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा, ठीक है। I'm sorry, but there was some discussion for the 10th standard to be done immediately. That's why. Okay. Acha. This is clear, I guess. The verbal description is given, and they have given nature of elasticity. These terminologies. So, if you see in short, whatever we learned until now, this is what is given in short. Okay. Only that the method is important. Which method are they calculating with? यहाँ पे ये एक मेथड से है, अभी तुम लोग मालूम है क्या कर सकते हो उसमें, तुमको Q1, Q2, P1, P2 पता चल रहा है, try calculating these answers with point elasticity and with percentage method and see what is the difference in answers you get, and if you don't get answers difference ऐसा होगा नहीं, but there will be some differences, especially अभी something this size, so such answers you will find that there will be a lot of difference in the answers coming. So just for home practicing, you can start doing these kinds of things. So let's go ahead. Now comes something which you have done, is the total outlay method. I guess you know what is this total outlay method. Let's go to the chart directly.
hopefully you remember what was in total outlay. We used to have a price and quantity column given. Then price and quantity हम लोग multiply करते हैं. Multiply करने के बाद उसको हम total outlay बोलते थे. Okay. What used to happen is then I taught in the classroom about the arrow marks. Okay. Well, I'll show you here. You have to wait for a minute. I'll show you the 12th standard. I will show you the 12th standard textbook where this method is mentioned. And we'll work on that activity again. This time's textbook I find is very interesting. कभी-कभी concepts में difficulty होगा ना, 12th का नया textbook आया है, तुम लोग वो भी उठा के देख सकते हो. It is fantastic. While सर teaching, 3 चैप्टर न्यू है ना उसमें? yeah, last का थोड़ा change हो गया उसमें भी. Chapters न्यू नहीं है, वो नाम अलग-अलग दे दिए वो लोग ने. But then they are dealing with the same thing almost. सर इस नंबर न्यू चैप्टर है. I saw the PDF. Okay. Which one you seeing is it? Because मेरे लिए क्या है, मैं इतना ये सब पढ़ाता रहता हूँ ना, तो मुझे नया पता ही नहीं चलता है तुम लोग ने जितना देखा है ये चीज.